mechanical energy. If a current carrying conductor is placed in a magnetic field, mechanical force is experienced on the conductor, the direction of which is given by Fleming's left hand rule. So first we will see what is Fleming's left hand rule. अगर हम एक मैग्नेटिक फील्ड में अपने लेफ्ट हैंड को इस तरह से रखें कि तीनों fingers, the thumb, the forefinger and the middle finger are 90 degree to each other, जैसे कि यहाँ फिगर में दिखाया गया है. So अगर हम इस तरह से अगर हम इस तरह से अपने हाथ को, लेफ्ट हैंड को वहां रखेंगे, तो द थंब गिव्स मी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, the forefinger gives me the direction of magnetic field, and the middle finger gives the direction of the current. Now we will try to understand the concept of back EMF. If the conductors of armature between poles of magnet, if it is rotating there, in a DC motor cuts the magnetic flux, thereby developing an induced EMF which opposes the applied voltage as per Lenz's law. The induced EMF set up in the coil of DC motor opposing the current flowing through the conductor when armature rotates is called back EMF. इसका मतलब ये है कि जो EMF इंड्यूस हुआ कॉइल ऑफ द डीसी मोटर में, वो अपोज करता है करंट थ्रू द कंडक्टर को. ये तब होता है जब व्हेन आर्मेचर रोटेट्स, जब आर्मेचर घूमता है, और इस ईएमएफ को बैक ईएमएफ कहते हैं. और ये बैक ईएमएफ स्पीड ऑफ रोटेशन के ऊपर डिपेंड करता है. जितना स्पीड होगा आर्मेचर कंडक्टर का रोटेशन का, उतना ही बैक ईएमएफ होगा. इट डिपेंड्स ऑन द रोटेशन. नाउ लेट्स V be the applied voltage, और EB is the back EMF, RA be the armature resistance, then IA the armature current will be V minus EB upon RA. लेकिन जब नो लोड कंडीशन होता है तो दी आर्मेचर पिक्स स्पीड, आर्मेचर की स्पीड बढ़ जाती है और बैक ईएमएफ स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, बढ़ता जाएगा बैक ईएमएफ. मोटर की स्पीड बढ़ती जाएगी, तब तक बढ़ती जाएगी जब तक बैक ईएमएफ और अप्लाइड वोल्टेज इक्वल नहीं हो जाते हैं. अंडर सच कंडीशन द स्पीड ऑफ मोटर बिकम्स कांस्टेंट. इस कंडीशन में स्पीड ऑफ मोटर कांस्टेंट हो जाता है एंड द मोटर टेक्स नो करंट. द मैग्नीट्यूड ऑफ बैक ईएमएफ इज गिवन by this. EB is equal to P phi NZ upon 60A volts. Now let's find out what is the torque equation of motor. So power delivered by motor is equal to TA into omega, where TA is the torque developed by armature and omega is the angular velocity. Here it is 2 pi n. So power developed by motor is TA into 2 pi n. Sorry, this is power developed. It is not delivered. So power developed by motor is TA into omega, where omega is 2 pi n. So power developed by motor becomes TA into 2 pi n. In the armature, the electrical energy is converted into mechanical energy, which is equal to EB into IA. The unit is watt. From these two equations, this is equation 1 and this is equation 2, we can write that TA
into 2 pi n is equal to EB into IA. By equating them, we will get this equation. Now, as we know that EB is equal to P phi nz upon 60A, we will equate EB with this. After solving this, I will get this value, TA into 2 pi n is equal to this. Work done by torque per second is equal to TA into